Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel. I am Subhranshu Pradhan. Start କରିବା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ pedagogy class ଯାହାକି 2013 ର already ଗୋଟେ ଆମର ସରିଛି paper 1 OTET paper 1 2013 ର pedagogy ଗୋଟେ class ସରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 2014 paper 1 ର pedagogy question। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା JT ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର pedagogy। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ JT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। For which of the following trial and error method is more useful? Which of the following trial and error method is more useful? कोटा useful अधिक? Skill achievement, collecting data, memorizing study, arriving at conclusion. Which of the following trial and error method is more useful बोली कहिछि। को थिरे ना trial and error method? Skill achievement टा ना collecting data ना memorizing study ना arriving at a conclusion? memorizing study होछि ए देथिबा अनुसार सी होछि यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, acting is an example of what type of imitation? Acting is an example of what type of imitation? एटा कोन कहंती ना आइडियोमोटर ना डेलिबरेट ना अनकॉन्शियस ना सिंपैथेटिक? यह कहा जाए 2 रो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेलिबरेट। नेक्स्ट, the child's ability to learn mainly depends on which of the following? Environment, observation, excursion ना maturation? गोटे चाइल्ड रो शिशुर एबिलिटीटा दक्षता शिखिबार दक्षता मेनली डिपेंड्स ऑन कहा ऊपर निर्भर करे? एनवायरनमेंट ऊपर ना ऑब्जर्वेशन ऊपर एक्सक्यूशन ऊपर ना मैच्योरेशन ऊपर? यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी मैच्योरेशन ऊपर। तार मैच्योरेशन ऊपर डिपेंड करे। व्हिच इज नेसेसरी फॉर मास्टरी लर्निंग? Which is necessary for mastery learning? Well organized teaching, removal of learning difficulties, adequate time, कोटा? for समस्ते mastery learning पाई well organized teaching दरकार, removal of difficulties दरकार, difficulties गुड को बाहर करिया दरकार, adequate time दरकार। डी हेबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5, case history method is more effective to study which of the following problem behavior of a child? शिशुर केउं समस्या अनुध्यान करिया पई व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे? ना क्लासरूम बिहेवियरल प्रॉब्लम आमे कोटा को ध्यान करिबा केस हिस्ट्री माध्यम से? लर्निंग प्रॉब्लम ना फैमिली प्रॉब्लम ना ई समस्त जा ओडी केस हिस्ट्री मेथड हिसाब रे आमे करि परिबा। आमे केस हिस्ट्री मेथड बा व्यक्ति इतिहास पद्धति पर आमे सबु तक आमे मापी परिबा। आमे क्लासरूम बिहेवियरल प्रॉब्लम मापी परिबा, लर्निंग प्रॉब्लम मापी परिबा, तापर फैमिली प्रॉब्लम मध्य मापी परिबा। ए समस्त यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6,
Which one is not a learning method? କେଉଁଠି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଅବଜରଭେସନ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଅବଜରଭେସନ୍ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଇମିଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଅବଜରଭେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଅନୁକରଣ ହିସାବରେ କରିପାରିବା, ଇମିଟେସନ୍ ହିସାବରେ, ଡିସ୍କଭରି ବି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। 6ର ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ। ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। 7. Which one of the following statement is correct? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? Mental development of the child depends on his environmental only ଦେଇଛି। only ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ତ ଏ ତ ହବନି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଖାଲି କେବଳ ସେଇଟାକୁ ବୋଲି ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି 7ର। mental development B ହେଉଛି କ'ଣ ନା mental development of the child depends on heredity only, ଖାଲି heredity only ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। mental development of the child depends on both environmental and heredity, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ସି ହେଇପାରେ। mental development of the child depends on his book based knowledge, ଖାଲି book based knowledge ହିସାବରେ mental development ହୁଏନି। mental development of the child depends on both environmental and heredity, सी ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन टा। What type of evaluation is OTET? OTET टा को प्रकार मूल्यांकन? आमे याको डायग्नोस्टिक कहबा ना फॉर्मेटिव कहबा ना समेटिव कहबा ना प्लेसमेंट कहबा? समेटिव तो होची हमर मैट्रिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जोटा लास्ट रे होय। फॉर्मेटिव तो हमर मझिरे मध्ये हेई पारे, टीचिंग देला बेले भी गोटे फॉर्मेटिव हेई पारिबो, तो एटा भी होबनी। डायग्नोस्टिक तो हमर कोन जति किछि जति भूल अछि कोन अछि ताको हमें डायग्नोस करिया पे ए करू। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ओटीटी इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोन तो आपण जानिथिबे जे जदी गोटे हमें एंट्रेंस टेस्ट बीडी करी बीडी करिया पई ता पूर्व जो एंट्रेंस दिया है सेटा क्वालिफाई कले हमें ओटीटी रे क्वालिफाई कले हमें टीचर पई अप्लाई करबा। ये सब गोटे गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जाउछ बा व्यवस्था न एहा कोडा जे कोहा। नेक्स्ट 9, generally what is the intelligence quotient of slow learner? स्लो लर्नर रो तारो इंटेलिजेंट कोसेंट केते थाई? इंटेलिजेंट कोसेंट रो फार्मूला कोन? फार्मूला होची आईक्यू रो फार्मूला होची मेंटल एज डिवाइड बाय रियल एज इनटू 100। जने जदी मेंटल एज होची 100 10 वर्ष एंड तार रियल अच्छी जदि से जदि 8 वर्ष इंटू 100 कले केते हबो? जहाँ 8 के 8 8 दुणे 16 120 125 हो जिवो तार। तो जनरली व्हाट इज द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ स्लो लर्नर? लेस देन 60 ना बिटवीन 60 टू 80 ना केते कहबे? स्लो लर्नर इज मोर देन 80 हे गला, एटा गोटे जीनियस ए सब कहबा। नॉर्मल टा होची 90 110 टा होची नॉर्मल सी टा। तेबे एटी जेतु स्लो लर्नर देछि 9 रो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बिटवीन 60 रो 80 होची हमें स्लो लर्नर बोली हमें कहबा। 90 रु 110 को हमें नॉर्मल बोली कहबा। 10 नंबर क्वेश्चन, what should a teacher do for dual class teaching? 10 क्वेश्चन नंबर 10, द्वैत श्रेणी शिक्षादान पाई शिक्षक कौन करबा उचित? गिव टास्क टू बोथ द क्लासेस एंड मेंटेन डिसिप्लिन सिटिंग एट द सेंट्रल प्लेस। ना गोटे शिक्षक मझी बसिकी
डिसिप्लिन केमती मेंटेन हबो एटा तो हबोनी ये नुह teach in the higher class and engage the monitor in the lower class to maintain the discipline এটা भी হবনি give tasks in the lower class and teach in the higher class and after the some time teach in the lower class giving tasks in the higher class এটা ହିଁ ପାରେ engage the student for the higher class student ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ सी ହେଉଛି यार correct answer 10 number सी ହେଉଛି correct answer which is the correct order of concept formation concept formation रो कोटा होची गुटे correct order question number 11 sensation perception discrimination and generalization c होची यार correct answer which is the correct order of the concept formation रो तार ये होची फर्स्ट होची sensation तापर हला perception तापर discrimination and generalization question number 12 what is the meaning of inclusive education रो अर्थ कौन बढ़िया क्वेश्चन inclusive education learning opportunity for disabled learner এটা কি এটা भी learning opportunity along with their rights for all category learner এটা भी होची এটা ତାଠୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଅଛି more emphasis to advanced learner এটা ତ କେବେ ବି ନୁହଁ more emphasis to slow learner ଖାଲି ଏଟା ବୋଲି କହିବାନି B ହେଉଛି ୟାର correct answer question number 13 which is an example of evaluation ର କୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି example examining high school certificate examination answer book तो कौन करवा which is an example of evaluation रो गोटे कोउटा एटा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा एटा गोटे एग्जामिनेशन हम बोली कहबा कि एग्जांपल ऑफ इवैल्यूएशन रो 13 एग्जामिनिंग क्लास एग्जामिनेशन आंसर बुक एटा कहबा कि ना एटा को हम गोटे एग्जांपल ऑफ इवैल्यूएशन बोली कहबा डी होची यार गोटे करेक्ट what is there at the top of Delhi's cone of experience what is there at the top of Delhi's cone of experience Delhi को cone of experience रो top रे कोटा oral symbol direct experience contrived experience ना visual experience ना top रे कौन अछि ना oral symbol अछि top रे अछि oral symbol अछि सबुठु top रे what is there at the top of the list cone of experience रो oral symbol सबुठु ऊपर अछि which is a projective ad blackboard fennel board epidiascope ना model प्रोजेक्ट एड कोटा 15 रो करेक्ट आंसर होची एपिडियास्कोप आमे ब्लैकबोर्ड एटा कहिबानी फाइनेंस फेनल बोर्ड कहिबानी मॉडल कहिबानी एपिडियास्कोप होची यार गोटे प्रोजेक्ट एड बोली child is like a tender plant whose view is this child is like a tender plant whose view is this Froebel, Rousseau, Montessori, Pestalozzi. 16 रो करेक्ट आंसर कोडा चाइल्ड इज लाइक ए टीचर प्लांट बोले के कहितले हुज भी हुई एटा कहितले फ्रोबेल कहितले जे चाइल्ड इज लाइक ए टेंडर प्लांट क्वेश्चन नंबर 17 if the intelligence quotient of an individual is 130
Then which of the following statement is correct? Mental age higher than chronological age. ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ସମାନ ଥିଲେ କେମିତି 130 ହବ? chronological age ଅଧିକ ଥିଲେ କେମିତି ହବ? mental age ଟା ଏ ହଉଛି ୟାର correct answer। 17 ର ଏ ହଉଛି correct answer। 18. Which method is effective for evaluation of both curricular and co-curricular qualities? Which method is effective for evaluation of both curricular and co-curricular qualities? 18. Uh, formative, diagnostic, comprehensive na summative? 18 ର correct answer ହେଉଛି option number C. Which method is effective for evaluation of both curricular and non-curricular qualities? ଯେଟାକୁ CCE ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ comprehensive ତାକୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ comprehensive and continuous ଯୋଉ ଆମେ evaluation କହୁଛୁ ସେଥିରେ ଏଇଟା comprehensive ର ତା meaning ହେଉଛି comprehensive method ଆମେ କହିପାରିବା is effective for evaluation of both curricular and non-curricular qualities. 18. Which of the following pair of psychologist and the animal on which he experiment to discover his learning theory is correctly matched? ନା କୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି 19 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଥର୍ନଡାଇକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଡଗ୍ ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ଡଗ୍ ଉପରେ ବି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। What type of questions should be teacher asked to identify creative children? 20. 20 ର correct answer ହେଉଛି option number A. What type of question should the teacher ask to identify creative children? 20 ର correct answer ହେଉଛି option number A. Divergent thinking question ସେ ପଚାରିବ diagnostic ନୁହଁ cognitive thinking ନୁହଁ activity based ନୁହଁ what type of question should the teacher ask to identify creative children ପାଇଁ ସେ କୋଉଟା କହିବ divergent thinking question ପଚାରିବ। Which one is not related with learner centered education? Which one is not related with learner centered education? Teacher act as a facilitator of learning. Learner is at the center of the which one is not related with the learner centered education? Learner centered education रे कोटा गोटे incorrect बा ठीक नुह बोली teacher act as a facilitator of the learner. Teacher तो facilitator ठीक अछि learner is at the center of the learning process भी ठीक अछि emphasis is given to the child experience एटा भी ठीक अछि teacher teaches through question answer method. तो 21 ର करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। या को हमें अलगा थरु टिके डिफरेंस बोली कहि पारे तो डी होची यार करेक्ट आंसर। 22 in our state elementary education means the education of children in which of the following class? elementary को हमें को क्लास रु को क्लास को हमें elementary education बोली कहउछु 22 रो करेक्ट आंसर होची क्लास 1 रु भी जाए हमें एलिमेंटरी एजुकेशन बोली हमर कहा जाउछि। एलिमेंटरी एजुकेशन कहा कहा जाउछि ना बी क्लास 1 टू भी को एलिमेंटरी पंचम क्लास है एलिमेंटरी एजुकेशन बोली कहा जाउछि। Who was the propounder of condition theory of learning? condition theory of learning किए देथिले condition की करथिले 23 रो पावलव देथिले condition theory of learning. Who was the propounder of condition theory of learning? Pavlov eta deythile. Which is not recognition type test? Which is not a recognition type test? Statement competition, true false, matching na multiple choice. 24 रो correct answer होची option number A. Sentence completion को
आम गोटे रिकग्निशन टेस्ट बोली कहि परिबा नाही बाकी मैचिंग टा गोटे सब एटा हबो गारो करेक्ट 25 व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी साइंस ऑफ लर्निंग साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग ना साइंस ऑफ टीचिंग ना साइंस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग डी तो होबोनी 25 रो करेक्ट आंसर होची साइंस ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ लर्निंग नहीं से साइंस ऑफ टीचिंग को कहा जाए पेडागोजी according to Horlock what is the age range of early childhood Horlock को अनुसार early childhood रो एज केते early childhood रो एज केते 2 to 6 year 6 to 10 year 2 to 10 year ना केते अर्ली चाइल्डहुड रो 26 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 टू 6 वर्ष को हमें अर्ली चाइल्डहुड बोली कहला हरलॉक को मतलब व्हिच मेथड इज फॉलोड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लर्नर हमें को मेथड हम फॉलो करूं द स्टडी द बिहेवियर ऑफ लर्नर ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एक्सपेरिमेंटेशन ऑल ऑफ 27 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी हमें सब गुडा हमें करि परिबा ऑब्जर्वेशन मेथड भी फॉलो करि परिबा इंटरव्यू भी करिबा एक्सपेरिमेंट भी करिबा सब होची रो करेक्ट आंसर at what stage of development the child differentiate between right and wrong at what stage of development the child differentiate between right and wrong 28 रो बी होची यार करेक्ट आंसर को स्टेज रे ना स्टेज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 29 which statement indicate the principle of development which statement indicates the principle of development development always takes place at the uniform rate development is a social centered process now development is a continuous process now development is a quantitative process which statement indicates the principle of development 29 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस सी होची यार करेक्ट 30 व्हिच इज द प्रोपाउंडर ऑफ द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टू फैक्टर थ्योरी के देथिले 30 रो करेक्ट आंसर होची स्पियरमैन देथिले टू फैक्टर थ्योरी बिनेट जो टेस्ट करथिले तो एतिकी थिला इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी सॉरी इंग्लिश का पेडागोजी क्वेश्चन आशा करूँ आपको भल लगी जोटा कि जेटी बहुत हेल्पफुल हम थैंक यू।